या हेलो। क्या मैम आप हाय। एक बार वीडियो पे आ जाइए। हाँ साहिल। मैम वीडियो पे आ हाँ हाँ जाइए। हाँ, आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। यस आपकी आवाज। यस। यस। यस मैम तो अभी आई थिंक यू हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड। अभी मैंने आपको जो अभी आज सेशन लिया था ग्रुप वाला, आई होप यू आर एबल टू गेट some clarity कि how can we impact and change our life। जो आपने देखा जो थोड़ा सा I just did a small process in front of you, like this is how we can impact anything in our life, anybody, and in our things in our life like you did। I was normally taking a session in front of you guys and doing this, and it can impact। So this is how you can also be if you follow the process and if you work with me, then you can solve a lot of your problems, you can be stress free, peaceful, happy in your life। And the just the basic for that I can share you a small thing which will help you to understand। So abhi aap ye batao mujhe ki that what is it that you want to achieve if you work with me for 3 सर months? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। So सॉरी सर, yeah, सॉरी, extremely sorry, I got a call, an important no call. issues, no issues। So what I want to ask you ma'am ki uh, right now if I ask you, if suppose you work with me for some time, over 3 months let's say, what do you want to achieve in life? Well, what kind of life you want to achieve? What all things do you want to achieve? If I say that God is with us right now, and and with His blessings, I can help you out in the next 3 months to achieve whatever you want to achieve in life। ठीक है, अभी जो भी कुछ चीजें जो भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? सोचो कि जो बोलोगे वो पूरा हो जाए। To be very frank, what I wanted to achieve, that I'm already in the process right now. Things are happening by God's grace because I'm very connected to universe and divine power. वाह। So I'm getting a lot of insights and intuitions, and things are falling into place. Great। Particularly, sorry to say, but I mean, it's very unfortunate. My husband passed away. हाँ, I know that, I know। Yes, and things were different earlier because I was not taking charge of anything because he was there, and I was like, uh, but now things, I have to manage everything, and now I can manage the way I want. So it was very chaotic earlier, because I was not used to facing court and cases and so many things which I never did in my life. I had to face that. It took me almost 1 year to understand what are the funds that I have to face, how many loans I have to pay, how many people I have to face, and so many things. But now things are very much in control, and I'm following the things. Only thing is that I'm not able to focus on my farmhouse, and that's why it's on a standstill, because I'm facing some court cases and some loans and something I want to settle down once for all. Yeah, so sorry to cut you. Just I wanted to only know what is it that you want to achieve. If there is anything that you want to improve or achieve, just tell about that। Yeah, like what I want to achieve is that I want to put my resort farmhouse in autopilot mode. Like there Mhm. are staff and things are taken care of. I just need to supervise things. That, and secondly, I want to get into my, I'm basically a journalist by profession, and I want to go back to my journalism again and be active on that front only because there Mhm. is my passion. Mhm. And the third thing is like I'm a marathon runner and I want to go back, like I'm still in it. I want to do cycling, start cycling as well. So I want to, Okay. these three fronts that I want to, really, that they should Okay. move the way Okay. I want. So right now, let me just share you a small process with you. Just visualize that you have achieved all these three things that you want to achieve. Okay. Just visualize, you can close your eyes if you want, that you have achieved right now.
all this, and now how are you living your life and how are you feeling about it? Okay. So much like you have achieved all this right now. What you are asking, just visualize right now only you have achieved all this. Now, how are you living your life? है ना, you can see yourself that अच्छा मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ऐसे हो गई हूँ तो मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही मैं हूँ वो। नहीं, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ टू दैट। नो नो नो, आप करो बस। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपको आप चाह रहे हो, है ना, जो आप चाह रहे हो उस चीज को बस आप विजुलाइज करो कि वो हो गया है, अभी हो गया। ये तो दैट्स कर व्हाट आई एम सकते हो। सेइंग, हाँ, दैट्स व्हाट आई सेइंग कि जो चेंजेस मैंने लाए हैं देन अर्लियर, थिंग्स आर हैपनिंग टाइम डिस्टेंस एंड फॉर्म, थिंग्स हैव चेंज्ड in my family, but I am still operating from my earlier mode only pattern. दैट इज ऑल राइट। Yeah, अभी हम उस the चीज पे same काम the करेंगे, दैट same इज thing. वन I थिंग am विच वी really विल not वर्क। able to connect myself, or I am not able to change myself to this new change. You know. So you don't have to change. You just have to just what you may say just अभी के लिए ये सोचना है कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं मैराथन दौड़ने लगी हूँ, ठीक है, मैं अपना जर्नलिज्म करने लगी हूँ अच्छे से, जो आप चाहते हो, ठीक है। Hmm. और ये जो मेरा रिजॉर्ट है ये ऑटो पायलट पे चला गया है, ये चीज अभी आप सोचो हो गया है, बस सोचो, सोचने Okay. के लिए बोलो, उसको Okay. विजुलाइज करो कि ऐसा हो गया है। तो अब Hmm. आप कैसी लाइफ जी, ठीक है, और आपको Hmm. क्या फील होता है, बस 2 मिनट करो, 2-3 मिनट आप ये कर सकते हो। I think. Um, मैम 1-2 मिनट और कर लो, बहुत जल्दी आपने okay. छोड़ दिया। Okay. दो Okay. मिनट Okay. 2-3 मिनट कर लो। Hmm. Can I say? यस प्लीज। हाउ डिड यू, या, Um, हाउ डिड यू फील? I think life will be more comfortable, more peaceful. I'll feel connected to my resort, which I'm not able to right now. Uh, but I also I'm scared that there will be vacuum in my नो life. बस just होल्ड ऑन। राइट नाउ हाउ डिड यू फील? It's like a life will be अभी updated. कैसा फील हुआ आपको, ये जो आप कर रहे थे, तो हाउ डिड यू फील? Hmm. Yeah, it's a nice feeling. Right. So you Yeah. see that this is how, in just a minute or so, I can help you to reach that mindset. And do you feel, do you like this? If you can be this for more time, if you can be like this and at this stage, in this mental state, लेकिन मुझे बहुत more सोचना पड़ रहा है ये सब चीज, लाइक वो चीजें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट, वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं और इसी से आपकी मेंटल क्लैरिटी खत्म कर देती है। और इसीलिए आप जो चीजें बहुत इजीली कर सकते हो वो नहीं करते। तो हमें वो मेंटल क्लैरिटी पे वर्क करेंगे तो सारी चीजें क्लियरली आपको दिखेंगी। सोचो जब आप उसको क्लियरली देख नहीं सकते हो तो कैसे अचीव करोगे? जस्ट थिंक the thing that you cannot think of, how can you even think to achieve that? So that is what is something that you need to work upon. Do you understand that? Can you understand? And this is the reason why people take like think of first that clarity कि हम कहाँ हैं अभी, प्रॉब्लम क्या है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तो अभी फर्स्ट स्टेप आई वांटेड टू हेल्प यू टू just a moment.
Yeah. So Sorry, extremely sorry. I'm getting these calls and I cannot नो avoid. नो नो नो, इट्स ऑल राइट मैम। इस लेवल पे जब आप आ जाओगे, जो अगर आप काम करते हो एंड यू विल लर्न दीज टेक्निक्स, यू कैन बी मोर पीसफुल, कूल एंड काम। सो ये चीजें आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी ज्यादा, एंड दैट इज व्हाट इज द राइट वे टू लिव लाइफ। Hmm. किसी की डेथ भी हो जाए तो भी हम खुश रह सके, और अपने मन में संतुष्ट रह सके, पीसफुल रह सके, तो वो है असली में कि हमने कुछ कुछ अपने ऊपर काम किया है। वरना Hmm. रो तो सभी सकते हैं, दुखी तो सभी हो सकते हैं, है Hmm. ना? फिर देन व्हाट इज स्पेशल अबाउट डूइंग एंड लर्निंग समथिंग? Hmm. Hmm. दिस इज व्हाट गेट। सो what I will ask you is, now I'm just helping you out to get that clarity, Hmm. कि जो क्लैरिटी चाहिए कुछ अचीव करने से पहले, अचीव करने के लिए तो कर हमें कुछ करना पड़ेगा या कुछ स्किल्स चाहिए, लेकिन पहले जब हम सोच ही नहीं सकते तो भूल ही जाएंगे हम कुछ अचीव करेंगे। जो चीज मैं सोच नहीं पा रही हूँ ढंग से, वो मैं तो ये क्लैरिटी, प्रॉब्लम कहाँ है, मैं रूट कॉज को समझाता हूँ पहले लोगों को। इट्स Hmm. ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट, नाउ यू विल फिगर आउट दैट वेयर यू आर राइट नाउ इन लाइफ, क्या प्रॉब्लम है या क्यों प्रॉब्लम। नाउ आई विल लेकिन आस्क यू। इसमें I just want to say something. See, I'm not getting clarity about how I feel after I finish these things. नो 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 नो, आई एम कमिंग टू दैट। अभी वो हुआ नहीं है पूरा, अभी मैं वही Okay. बताऊं। Okay. द नेक्स्ट Sorry. क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस ओनली, दैट व्हाट इज इट that is stopping you from achieving all this? Nothing. I am prioritizing my things, so I am not able to focus. Right now, You what are for? prioritizing your things, so you are not able to do. Yes. Okay. So, okay. So See it means, so single-handedly. so where is the problem? That is what you are not able to prioritize. No, no, Uh, I'm able to prioritize. See, हाँ, one person cannot handle 10 things at a time. अच्छा. So the I can. problem I is can. I was doing the that. problem is multitasking. That is No, with no, you. that is not. Right? That is also not the problem. Then, That is also because I was doing multitasking also, but that was taking toll on my health. मेरा बीपी शूट हो रहा था, and now my hmm, kids and myself, I cannot hmm, afford to lose my okay. peace of mind. So I Hmm. thought ki let's Very focus on this important first. point. Keep this in mind. This peace of mind. We'll talk on that more. Yeah. Yes, yes. Now, yeah. So yes. So what is the problem basically? Or what is it stopping you from being able to achieve this? No, that's what I said. Now I'm prioritizing that. Once I Okay. settle these things, नो then I बट will आई एम focus आस्किंग on. यू, अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हो या कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है इस चीज में, या आपको लगता है ये चीज थोड़ी और अच्छी हो जाए तो मैं और अच्छा कर लूंगी, तो मैं इसको तुरंत अभी अचीव कर लूंगी या जल्दी अचीव कर लूंगी इन सब। नहीं, अभी जैसे अगर मुझे रिसोर्ट पे फोकस करना है तो सी I have to raise funds first of all, get certain things done. I have to hire someone. I have to interview them. फिर उनको टेस्टिंग करना, उनको तैयार करना. Then मार्केटिंग के लिए किसी को लेना. So many things I have to. मेरी बहुत एनर्जी उसमें चली जाती. हम्म। एंड अभी तो कैसा है ना कि बाकी चीजें मेरी एनर्जी ले रही है बहुत ज्यादा. यू नो सो एग्जैक्टली, सो व्हाट यू मीन टू से इज कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट हैविंग दैट एनर्जी, लूजिंग आउट एनर्जी ऑन दैट, वो थोड़ा सा अगर, दैट इज नो व्हाट, आई इज हैव दैट व्हाट? आई हैव दिस एनर्जी ऑल्सो, लेकिन आई डोंट वांट टू एट अ लूज टाइम. आई योर, डोंट वांट टू मल्टीटास्किंग क्योंकि उसका मुझे हेल्थ पे हाँ। आई सो डोंट व्हाट वांट यू टू. मीन टू से इज दैट, हाँ मैं समझ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको चाहिए, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि what you mean to say is I want to achieve all this in a way very, which is very peaceful, in a very peaceful and Yes. not so what you may say, hard way, that Hmm. it should be Yes. very easy, simple Yes. and Secondly, and my peaceful. son, yeah, my son who just graduated, he did business administration recently, and I really expected him to take over some responsibility in my resort. But he does not seems to be so forthcoming or not seems to be interested about it. And I'm a bit Okay, disappointed. so And this he is the doesn't know, second thing. actually not to blame him because he doesn't know what to do. Everything Yeah. he is asking me and I have to give him answer and I have to follow everything. So it's like वो झील उसमें नहीं लग रही है मुझे. So I know that उसके ऊपर डालूंगी तो मेरे ऊपर आने वाला है सब.
सो अल्टीमेटली अच्छा, थोड़ी सी उसकी सो मदद थोड़ा सा एम्पावरमेंट और थोड़ा सा वो हाँ अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं हो पा रही है उस हाँ बेटे की, हाँ एक हाँ ये प्रॉब्लम है, हम्म, इफ आई अंडरस्टैंड। yes, एंड द अदर थिंग इज दैट यू वांट टू डू इट इन अ वे which is मतलब you want to achieve more but in a way which is easy, simple yes, and yes, peaceful for yes, you yes, and yes, happily, yes, मतलब yes, स्ट्रेस हाँ के बिना, बिना स्ट्रेस के आप कर सकते। हाँ बिल्कुल तो नाउ लास्ट थिंग, हाउ इज इफ यू आर नॉट एबल टू राइट नाउ, जो आपका करंट सिचुएशन है जिसमें आप पूरी तरीके से अभी वो थोड़ा थोड़ा अचीव नहीं कर पा रहे हो, हाँ हाउ इज हाँ इट इम्पैक्टिंग योर लाइफ? मतलब व्हाट इज द थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी स्टक कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू दैट? हाँ या थोड़ा स्टक फील कर रही हूँ मैं थिंग्स आर मूविंग थिंग्स हैव मूव्ड आल्सो पॉजिटिवली द वे आई वांट लेकिन जिस कारण के लिए मैंने वो सब किया है वो कारण लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे सो जो व्हाट चीज इफ, अगर हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ कि कोई चीज अगर हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करती है पॉजिटिवली तो वो करने का वैसा पॉइंट नहीं रहता है कोई चीज सेटल डाउन एग्जैक्टली, प्लानिंग जो भी है जिस तो जी, वो बट कॉन्शियसली दैट इज ऑल्सो देयर ऑल्सो आई जस्टिफाई माई सेल्फ कि नहीं नहीं ये हो गया लेकिन ये अगर हो जाता है तो हम लोग ये करेंगे सो अगेन आई एम अंडरस्टूड। स्टैंडिंग इन द सेम पोजिशन विच आई स्टूड बिफोर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट तो माई सन इज लाइक कि क्या आपका ये आपको कुछ आप सोच ही नहीं कर पाते कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डे टू लाइफ में वही रोना धोना चल रहा है मैंने ही इज सो नॉट रॉन्ग ऑल्सो एग्जैक्टली ना, सो एग्जैक्टली जो भी अभी आपने प्रॉब्लम्स बताई, जो भी चीज है, आई थिंक मतलब इट इज हाउ मच इज इट इम्पैक्टिंग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप कितना रेट करोगे इसकी इंपॉर्टेंस को, या जितना ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है ऑन अ स्केल ऑफ 1? फाइव फाइव बोल सकते हो ओके, सो नाउ आई कैन टेल व्हाट इफ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आई नो कि दिस थिंग्स आर सेटल डाउन लेकिन 5% ही है कि उसका इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है हाँ इट्स लाइक हाँ जी, सो अभी जो आपने बात की, आई वी हैव अंडरस्टूड दैट, आपने जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी चीजें बताई, व्हाट इफ I can help you get more clarity in your business. Okay. What if I can help you to get your son to be a bit empowered and be more accountable towards your business? And what if I can help you? जस्ट मोमेंट Yeah, जस्ट साहिल जरा आवाज बारीक कर टीव्हीचा yeah. सॉरी सॉरी And last but not the least, आपकी what आवाज if? नहीं आ रही है हेलो अच्छा, अब आ रही है? नहीं अब नहीं आ रही है एक मिनट आ रही है? अच्छा, हेलो अ, हेलो अब आ रही है? नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है आ नहीं रही? आई वॉज गेटिंग सम वीडियो कॉल विच आई इग्नोर्ड जस्ट नाउ अच्छा, तो वो आपकी हाँ शायद आपका वीडियो बंद हो गया, ऑडियो बंद हो गया क्या? एक मिनट आई जस्ट चेक या मैडम, ऑडियो कनेक्ट कीजिए, ऑडियो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ सबसे लेफ्ट में। हाँ नाउ नाउ, आई कैन हियर यस यू यस, तो वो आपके एंड से हो गया। सो फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू, I just three things. What if I can help you to overcome all this, get you more clarity, make you bit more empowered enough, more blissful, peaceful and happy, and becoming a performer. So it's like becoming a peak performer who is blissful, peaceful and happy. तो आप ये बहुत सारी चीजें कर सकते हो शांत और हैप्पी और ब्लिसफुल रहते, ओके, एंड दैट इज what is required. जैसे टुडे इफ यू नो, and the third thing is, how can I make your, if I, what if I can help you, your son
to understand that and be accountable to you and be like a team to you. We can be like a supporting hand to you. What if I can make him that accountable? So these three things with very much ease, just like today, what you experienced in my session, where in a group of people, everybody who had their tensions, job tensions, or whatever it is, much more feel better. And you yourself. So how this is how you have experienced a little bit. With that mental peace, happiness, and bliss, if you can achieve all those tasks without affecting your health, in fact, you will improve in your health a lot. You will become more stress free and you will feel confident about it. The most important thing is have that willpower, that energy, and that confidence to do overcome along with clarity. It's a very good idea, but the thing is that I'm very sorry to say, see, I have been doing so many courses, so Mhm. many. You just name Mhm. it, and I have done so many things, which Like, my son also. like, Uh, are अपनी you language. are you are you a healer or somebody? Do you do healing? Yeah, I have done so many courses in that also, रेकी का. Reiki, लेकिन मैं Reiki. I don't heal others वगैरह. मुझे वो, हाँ, हाँ. लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है मेरा. आई हम्म. कॉन्शियसली आई डोंट डू, लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है. इफ लाइक माय क्लोज फ्रेंड इफ ही कॉल्स अप एंड इज शेयर समथिंग कि बहुत पेन हो रहा है, तो आई गेट दैट पेन एंड ही इज हील्ड, जबकि मैं हम्म. कॉन्शियसली कुछ नहीं करती, तो हम्म. मैंने बहुत सारी ये की है. एंड नाउ आई एम एट दैट स्टेज ना, भी अभी मुझे कोई कोई चीज फॉलो करने के लिए ना बहुत वो, आई डोंट वांट टू यू नो डू दैट होमवर्क एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, मुझे बड़ा बगिंग I लगता है. what if I tell you not to do any homework but simple ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को और सिंपल बना देगी और पीसफुल और हैप्पी बना देगी. लेट मी जस्ट शेयर विद यू वन थिंग. लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है. Why is everybody suffering in life? Why is not everybody happy? The reason what they are earning so much, they have so many facilities these days, but why are they still not happy, peaceful, and satisfied within themselves? Okay. So what do you think? Who are we? Are we bodies or something else? No, we As are an soul, entity, and I'm we are soul. exactly on that journey only. I'm Yeah. on a spiritual So journey now, right now, and great. I really follow my intuition, and things are taking place Good, positively. good, good. And I'm feeling very peaceful as far as this journey is concerned. आपने कोई कोर्स किया है कोई पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी पे या एनी नहीं पर्टिकुलर गुरु किए यू किए फॉलो? होंगे मैंने, बहुत सारे किए होंगे, लेकिन नाउ आई डोंट फॉलो एनीथिंग राइट नाउ. आई जस्ट एग्जैक्टली. फॉलो माय सो इंस्टिंक्ट एंड दैट्स हाँ, इट, दैट्स अभी मैं इनफ फॉर मी. आपको एक चीज बताता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में. डू यू नो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ सोल? नहीं, देयर इज नो फॉर्म. Okay, let me share with you something. And what do you feel? What why is this word made? मतलब कि बना क्यों है ये? What do you feel that? And who is God according to you? Who is God? The universe is God. I don't believe in God Okay, thing so like that. let me share with you something why you will not understand कि आपने courses तो बहुत किए but जो सबसे सबसे important चीज है वो मैं आपको कुछ share करता हूँ. Maybe that helps you get some clarity. Mhm, That is the reason why you are stuck up a bit mhm, even after doing so many things. mhm. So let us understand what you said is. I hope you are able to see my screen. Huh? Yes, yes, yes. So what if I share with you that Mhm. as you shared, we are neither the doctor nor the person nor the child. We have Right, spiritual variations. But right. what we are is, so let me share you are a soul, that is what you understand. But Yes. when you told that there is no form, let me share with you something which may change some mindset of yours. So Mhm, just see how are we formed. This is how we are formed. Okay. So mhm, this is a point of white light. That is the form of soul. Just imagine. Such a pity. We know about so many things in life, so many technologies, so many courses, so many things. But the irony is that the entity we love the most in our life, we don't know about it. Who are we? What is our real form? And that mhm, is the reason why we all are suffering in our life. mhm, Even are having so many courses, so many gurus, so many things. So just see, we don't know the basic thing. We have become 40, 50, 60, 70s of age. We even die. We don't know who are we. Such a pity. And that is the thing which everybody says, I have done this spirituality, that spirituality. Ultimately,
They are not at all, they are suffering from some or the other thing. Take your example, take others' example. Even I was into spirituality, but I was suffering from such a serious disease, IBS. So means there is something, some gap, which is there, which is not correct in our life or in our knowledge, which is not providing us the real solution, so that we are not able to have a happy life, or get better in our lives. And that is what makes us more and more and more unclear about our things and why all these things are happening and all those stuff. So now, if you understand, why do you put a tika here? Just ask a pandit. Nobody will ever be able to tell you. Is Now, it the tax reason builder we, account? yes, the reason we put a tika here is because the soul is situated here. So now you see what is the form of a soul and where does it get situated on. So it's situated here. Yes, that is why you put a tika or a bindi here and nowhere else. And that is why people feel good about putting a tika here, because that gets activated, this soul form. Because they are soul, not the body. So that is why just check out. There is no place else where we put a tika or a bindi. Okay. So it's like body is like the home for soul. So you have to understand that you are not this body whom you are troubling up with. Your husband was not the body that went away. So you have to understand, and it takes away all your pain out of yourself. That he also is a soul. You are also a soul, and he is just on a different body right now. He's playing a different part, Mhm. but he's not dead. Nobody dies. We are all souls. We are forever existing. We cannot die ever. So there is no sorrow at all as such in life. It's just like we are changing our. Just see, if you change the movies, if you see the movie, Amitabh Bachchan sometimes becomes a father, sometimes becomes a grandfather, sometimes becomes a villain, but he enjoys that. No, in real life, he enjoys. So that is what we are having in this life. We are actually souls, but we are just playing this movie. Today, you are playing this role. Tomorrow, you will be playing next birth, you will be playing another role. Next birth, you will be playing another role. But you are not dying and you are not, there is no sorrow as such. Your husband has just shifted to a new movie, a new role. So if you understand that, a lot of pain and sufferings in our life get away, and which create a lot of blockages which you don't know. You feel that you're out of it, but actually it is at a very subtle level inside, which is creating lack of clarity, stress, a lot of problems inside you, which you are not able to figure out. But ultimately they are causing something or the other of discomfort to you, or some way stopping your success, more speed. So that is the waste. That is kind of a waste which is stopping you, which is not able, where you are not able to focus all your energy at one point and get success and clarity quickly. Okay. But I'm not stuck as well as this death is concerned. No, what you are, what, wherever you are stuck, I'm not saying that you are completely stuck. What you shared last is somewhere or the other you feel stuck. That is what I'm talking. So it's just like the soul is driver of its body. So if you don't know yourself, how can you actually get the right results and the right whatever courses you did? If you don't till now don't know about your real identity, then how can you expect them to work for you 100%? They may be Okay. good. I'm not saying they may be good. I'm not saying, and they They are are good. all very good. They all very Yes, good. yes, I wasn't yes, able to yes. practice. I So was that is not what able I'm to. saying. That is what I'm saying. I'm not saying that they are not good, but that they are not the ultimate one. Why? Because they are not taking your real identity to be into consideration. Just imagine if you have a hotel and you are treating it like a resort. You have just a restaurant, sorry. Let's take it that way. You have just a restaurant, and if you treat it as a resort, would you make the right strategy? Would you make the right decision business? No, So that is what is happening. You are actually a soul like this, and you are treating yourself to be a body. How can it work? And all those processes that you have done follow the same thing. They are not clear about it. Only the one way where I'm sharing it's something that you get that clarity about yourself, who you are, and that is why you become more confident that this thing will definitely work, because it's working at the right concept, at the right root cause. So you yourself put your brains and understand if I'm whatever I'm saying.
is not correct as compared to whatever you have done so far. Okay, it's nothing is bad, but yes, it's good. But what is accurate? What is the best solution? Don't you always want the best solution for yourself? So that is. Yeah, but like I just want to, sorry to disturb you, like in what I, at this point of time I'm thinking ki, see, I'm on this path and I follow my intuitions nowadays. I completely Yes, follow my intuitions. So if my intuition is telling me to take a stop in my resort, don't worry. And like if something else is destined and I'm after it, like for example, if you say ki it should run, and that should be the thing ki, if I have this setup ready and I'm not focusing, I'm the mad person that I'm not focusing on it. ma'am, that is why is not that why is all that not happening? Because there is a congestion inside, which is creating a lack of clarity inside. आप सोचो पूरी तरीके से अंदर कुछ वेस्ट है अंदर, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है आपके उस कंजेशन से, आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही, यू आर नॉट एबल टू थिंक इजीली लाइक व्हाट यू शेयर. So that is all. If you But cannot if think that is something, the, if I am being guided divine, by divine power like that only, then it's so a this is also duality. why don't you think that even the way you have if you have connected with me, this may also be a guidance of divine? Yeah, Maybe. might be. That's what I Yes. connected with, Yeah. So that is what I'm saying. So you Mm. treat it this way, no? If you are following that way, still it makes sense Mm. to understand, to connect with me and follow me. Mm. Even if it's not the case, then you put your brains and understand if whatever I'm sharing makes sense to you or not, or is it really correct or not. I'm Okay. not saying that you just believe it, believe me, like a blindfold. But what I'm saying is, put your brains and try, you will yourself get the answer. Yes. This is only divine intuition. You get that, you get that clarity if it is connecting with you or not. Okay. Now, so it's like, why are the problems happening? Because all these five senses are governed by the soul. So if you don't even know about that completely, how can you have more control over yourself, your mind, your intellect and impressions? What people know all about is mind. Everybody talks about mind. But what if Mm. I tell you that we are not only mind, but a combination of mind, intellect, and impressions, which And is third thing is, impressions, mm, values, okay. personality as a person, like this. Mm. सो ये तीन चीज मिला के, अभी हम केवल माइंड पे ही काम करें, सारे कोर्सेज में जो आप करते हो माइंड पे काम करते हो, लेकिन वो क्योंकि पूरी चीज नहीं है इसलिए आप पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं Mm. मिल पाता. But if you work on your intellect and impressions also, then you will actually become more completely clear and successful and powerful. ठीक है? And that is what constitutes, all these three constitutes your soul. Mm. ये क्लैरिटी से आपका सोल एम्पावर हो जाएगा, या तो सोल को एम्पावर कर लो डायरेक्टली तो ये तीनों चीज फिट हो जाएगी, या बाकी दोनों चीजों को वर्क कर लो तो सोल एम्पावर, एनी वे यू टेक. एंड व्हाट वी डू इज we because we know now from a single point we can manage the whole body, every senses or every sense of our body. So isn't it easy? Doesn't it make your work more easy and simple, with bliss, peaceful and happiness, to easily achieve and get that clarity, as compared to lot of other processes which you must have done or which you may do. वहां पे केवल मेडिटेशन शुरू करने के लिए आप बैठो, ये करो, टेप चलाओ, ये करो, वो करो, और आज आपने मेरे को देखा, हाउ इजीली आई डिड दैट. कोई बता भी नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं नॉर्मल वर्क कर रहा हूँ, और सोचो आप ऐसे दिन भर काम कर सको, अलग से कोई आपको टाइम ना निकालना पड़े, विदाउट. सो व्हाट आई हेल्प पीपल इज टू ओवरकम all the challenges in their life without pills or surgery or anything, चाहे वो disease की बात करें, or any extra time or long hours of natural practices, even if it is yoga or exercise. But आजकल टाइम की कमी है, तो अगर आप वो चीजें साथ साथ कर सको, your productivity increases, you're able to your ability to multitask increases, you will be able to manage even your marathon, even your journalism. You got to have that energy, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना तो फ्लो करेगी, आप बोलोगे मुझे और काम दो, मुझे और करना है. और जब वो एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको थकान आएगी, पीस, आपका एंगर आने लगेगा, पीस हट जाएगा, हैप्पीनेस हट जाएगा. That is what I'll help you with within these 3 months. And you have seen, if I am not able to do it, how can I teach you? But if I'm able to do it, and you have seen it, then do you think that at least
there is some chance that I can definitely help you out with that if I can do it and I can show it to you. So that is what you have yourself experienced with so many people, not one, two, three, so many people with. So अगर 5 लोगों को एक साथ में इतना इम्पैक्ट कर सकता हूँ, तो सोचो अगर एक आदमी मेरे सामने है और मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसको कितना इम्पैक्ट और कितना पावरफुल है. And that is what you can also do, provided, but that requires a lot of purity, energy, connection to God. Okay, that peace, happiness, bliss in abundance. उस लेवल की एनर्जी चाहिए कि आप खुद भी एम्पावर्ड रहो और दूसरों को भी एम्पावर्ड कर सको, कि आपका बेटा भी आपसे एनर्जाइज हो जाए और वो ऑटोमेटिकली आपकी बात मानने लगे. इस तरह की अथॉरिटी हो आपकी. तभी मैंने आपसे बोला तीनों चीजें होंगी आपकी. अकाउंटेबिलिटी आपके बेटे की, पहले आप खुद एम्पावर्ड होगे, खुद क्लैरिटी आएगी, फिर ऑटोमेटिकली आप अपने अपने बेटे को भी एम्पावर कर सकते But the thing is ऑटोमेटिकली. that I am doing things in front of him. I have two sons, and second is in 12th standard. They are seeing me struggling, handling so many things at a time, and I have to handle home also, and so many things. They are seeing it, but मैं तो उनको मैम जब आई विल, हाँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. देखो कुछ कुछ चीजें होती है ना, लैक ऑफ एनर्जी अंदर से, वो थोड़ी सी चीजें और एक रीजन, वो उनको वो अकाउंटेबिलिटी अगर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो तो मैं आपको वहां भी हेल्प कर सकता हूँ. अदरवाइज आई कैन वर्क ऑन यू, मेक यू योरसेल्फ सो एम्पावर्ड दैट यू कैन इम्पैक्ट दैट. उनको पता भी नहीं चलेगा. आप सोचो आज जैसे अगर उनको मैं उनका माइंडसेट और थॉट प्रोसेस पॉजिटिव कर दूं, तो उनको उनको अंदर से इतनी एनर्जी दे दूं, ऐसी बुद्धि दे दूं कि वो आपको हेल्प करने लगे, उनको ऐसी हाँ, अंदर से घर की फीलिंग आने छोटी लगे. छोटी चीजें, घर की छोटी छोटी चीजें होती है कि जो खुद की आप समझ समझते हो, हाँ, बेड आप बेड समझते तैयार हो. करो, ये जो भी है छोटी छोटी सी, वो इतना मैंने, मैम इट्स नॉट मैं अ आपको बिग एक थिंग. चीज बोलूंगा, मैं भी वैसे ही लड़का था. मैं हम लोग भी कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई राम या कृष्ण हाँ जैसे. हाँ हाँ मैं हाँ. भी ऐसा ही हूँ, लेकिन वो क्यों था मुझे समझ में आया, लैक ऑफ एनर्जी और क्लैरिटी. आज हम्म. जब एनर्जी इतनी है ना, तो ऑटोमेटिकली मन करता है, मैं आपको फ्री में बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं अभी कोई पैसा ले रहा हूँ, फ्री में मैं लोगों को इतना कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अंदर इतनी एनर्जी है. हम्म. तो ऑटोमेटिकली उन लोगों में भी जब एनर्जी आएगी ना, वो खुद उठ उठ के कूदेंगे, मम्मी Yeah, क्या that करूं is true. बताओ. That is true. They say that also. यस, वो बहुत एंड दैट पेल इज फील व्हाट आई एम करते हैं. टेलिंग यू, दैट इज व्हाट. एक तो ये चीज एनर्जी, और दूसरी चीज वो बुद्धि, वो नॉलेज, वो समझ चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई मेड दिस पॉइंट, इंटेलेक्ट बहुत जरूरी चीज है. केवल मन Okay. का शांत होना जरूरी नहीं है, वो ज्ञान भी तो होना चाहिए कि माँ, हम्म. ये चीजें मुझे करनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है. अब मेरे पिता नहीं है तो मुझे माँ को और ये सपोर्ट करना चाहिए. ये तो समझदारी है. तो ये आप नहीं ठूस सकोगे उनमें, उनमें खुद वो जब समझदारी आएगी तभी करेंगे. आप चाहे जितना बोलोगे ना, नहीं करेंगे. आप करके देखा होगा आपने, ऐसा नहीं आपने नहीं करके देखा होगा, लेकिन वो नहीं करेंगे. मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं Right. आपको हेल्प करूंगा कैसे सोल्यूशन करना है. वो कैसे होता है, वो उनको थोड़ी नॉलेज देनी होती है. खुद आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, जैसे आज मैंने किया, किसी को पॉजिटिव फील करा सकता हूँ, किसी का थॉट बदल सकता हूँ. तो वो मैं उन लोगों के साथ भी कर सकता हूँ. वो लोग भी पॉजिटिव फील करने लगेंगे, आपको आपके लिए सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, और इंटेलेक्ट भी देंगे, ज्ञान भी उन्हें देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें उनमें वो So शक्ति भी आ you will जाएगी. work directly with them. आई विल, इफ यू विश, इफ यू वांट टू वर्क विद मी, आई विल स्टार्ट विद यू. अल्टीमेटली ये गोल लेकर के कि आपको जो जो चीजें चाहिए उनको अचीव करने की हमें तरफ काम करना है. अब उसको आप कैसे कर सकते हो, अगर वो लोग ला सकते हैं तो मैं उनमें भी मदद कर सकता हूँ. बट इंडिविजुअली उन पे काम करना मतलब अलग से भी एक एफर्ट लगेगा, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी. And बट they वो आप don't बताना. believe in these things. they वो बोर हो मैम जाते हैं सब चीजों से. दिस इज नॉट समथिंग कि मतलब आई, दैट इज समथिंग आई वुड नॉट लाइक टू बोस्ट अबाउट इट. बट मेरे पास 100 चीजें, एक चीज के 100 सोल्यूशन. दैट हम्म. इज व्हाट पीपल लाइक अबाउट इट. तो मैं आदमी को देख के बात कर, तभी मैंने आपसे पूछा, कुछ चीजें समझी, आपको समझा पहले मैंने, फिर मैंने आपको वो सोल्यूशन पिच किया. अब इसी के बदले आपका बेटा होता तो मैं उससे ये बातें नहीं करता. हम्म. उससे मैं एक उसके लेवल पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके पसंद की चीजों से कनेक्ट करता, उससे दोस्ती बनाता, वो मुझे बिलीव करने लगता, फिर वो मेरे साथ जो मैं बोलता उसमें आ जाता. अगर मैं फिर Right. मैं भगवान की चीजों में ले आऊंगा तो वहां भी वो आ जाता. हम्म. लेकिन मैं पहले से ही फोर्स करने लगा तो वो भाग जाएगा, वो छोड़ के, भाई मेरे को तेरे साथ बातें नहीं करनी. कौन है हम्म. तू? मैं अपनी मम्मी की नहीं सुनता, तेरी क्यों सुनूंगा. हम्म. तो यही बात. सो देर इज अ वे टू टैकल, एंड दैट इज ऑल व्हाट यू गेट व्हेन यू हैव दैट इंटेलेक्ट.